Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing three-dimensional geometry, and under this, we are doing the chapter Belan, that is the cylinder. We have already defined this word. There are several examples of cylinder in our daily life. नाम से स्पष्ट है, बेलन रसोई में बेलन जो है उसका आकार आप सब जानते हो. ग्लास जो होता है हमारा टम्बलर, दैट इज ऑल्सो सिलेंडर. सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिलेंडर. लेकिन जब भी हम बेलन की बात करते हैं, वो जो बेलन होता है वो हमारा राइट सर्कुलर बेलन होता है. राइट सर्कुलर बेलन मीन्स इट्स जस्ट लाइक दिस. दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. Its base is perpendicular to the axis. It is better to say this is a fixed line and this is a moving line. The position of the moving line is in such a way that it is always at a constant distance from this fixed line. ब्लू लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है वो फिक्स्ड है. फिक्स का मतलब हुआ टाइम के साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदलती है. जो ये रेड लाइन है वो इसके पैरेलल है. पहली शर्त जो है, दिस मस्ट बी पैरेलल टू इट. जैसे यहां जो है सिलेंडर, हाउ टू डिफाइन दिस इज फिक्स्ड लाइन. सो द लोकस ऑफ दिस लाइन, दिस इज मूविंग लाइन. यह इसको बोलते हैं जनरेटिंग लाइन, जो पृष्ठ को पैदा करती है, जनित करती है. कंडीशन क्या है? दिस लाइन, सरफेस जनरेटेड बाय द लाइन विच इज पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन एंड इंटरसेक्ट्स द गिवन कर्व, देन द सरफेस इज लाइक दिस. This surface is a cylinder. ध्यान रखना, ये लाइन इस तरफ है, ये लाइन इसके बीच में नहीं है, because the curve is here. So, what is a cylinder? A surface generated by a line which is parallel to the fixed line and intersecting the curve that is called the guiding curve, then this surface is known as cylinder. लेकिन जो सिलेंडर आप और हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे ऑयल के ड्रम्स होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी पॉपुलर वर्ड है. दिस ऑल सिलेंडर्स आर राइट सर्कुलर सिलेंडर. नाम से स्पष्ट है, सर्कुलर मीन्स द बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कल. Right means perpendicular. जब भी आप और हम सिलेंडर बनाते हैं उसको इस तरह से बनाते हैं. Here it is. This line is axis, जिसको हम बोलते हैं axis. This is generator. This distance is fixed. Here it is. It is equal to this. This is called radius of the cylinder. त्रिज्या.
आपने और हमने जब भी सिलेंडर, जब भी बेलन बनाया था, हमने बिल्कुल इस तरह से बनाया। सो हाउ टू डिफाइन, कैसे परिभाषित करें इसको? This line is fixed, the dotted one is fixed line. ये fixed line, this is the moving line, ये लाइन मूव करती है। लेकिन अब गाइडिंग कर्व नहीं दे रखा है, दिस इज नॉट गिवन। क्या दे रखा है? इस लाइन पे शर्त है, क्या कंडीशन है? दिस लाइन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लू लाइन। ये लाइन जो है यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लाइन मूव कर रही है, सपोज दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, अगेन मूविंग देन 2 सेंटीमीटर, again moving then 2 centimeter, again moving then this 2 centimeter. So the surface is around this line. जो surface बनेगा वो इस blue line के चारों तरफ बन रहा है। It is like this. And the distance is fixed. So automatically the base is a circle. जो आधार बनेगा वो circle बनेगा। And this is always perpendicular to this. So axis is perpendicular to this one. यहां जरूरी नहीं था, यहां जो इसका बेस था गाइडिंग कर्व, वो कुछ भी कर्व हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग एल्स। दिस इज द जनरेटिंग लाइन, एक्सिस इज एट दिस पॉइंट, मींस द लाइन इज मूविंग लाइक दिस। यहां डिस्टेंस नहीं दे रखा है क्योंकि एक्सिस यहां पर है और जो मूविंग लाइन है वो यहां पर ऐसे मूव कर रही है, वो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। लेकिन ध्यान क्या रख रहा है कि जो नीचे कर्व दे रखा है, जो उसका बेस है, उसको इंटरसेक्ट करते हुए मूव कर रही है। लेकिन इसके पैरेलल होना चाहिए, इसके समानांतर होनी चाहिए लाइन। बट हियर इट इज, दिस कर्व इज नॉट गिवन, गाइडिंग कर्व इज नॉट गिवन। व्हाट इज गिवन? द फिक्स्ड लाइन इज गिवन, दिस इज अ मूविंग लाइन and this gap means this distance is fixed. So the surface generated by this line is a right circular cylinder. So how to define this? A surface का मतलब होता है crust generated by a line parallel to the given line that is fixed. This line is fixed line. So surface generated by a line parallel to the given line and at a constant distance from it is known as cylinder. This constant distance is called the radius. ये जो गैप है ये हमेशा मेंटेन रहेगा और ये जो गैप था उस गैप को हमने क्या बोला? रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि इसका जो आधार बनेगा वो सर्कल बनेगा। Here you can see this is a cylinder, बेलन है ये। This is a circle, इसका बेस वृत्त है। And this is axis, अक्ष, fixed line. Moving line is this one. ये मूविंग लाइन है, जैसे मैं ये लाइंस बना रहा हूं इसके ऊपर, ऑल दीज लाइंस। तो जो एक ग्रीन कलर का सरफेस बना, हरे कलर का जो पृष्ठ बना है वो बेलन का सरफेस है और ये जनरेटिंग लाइन इस पे है। तो ये जो गैप है आप देख सकते हो, रेड और इस ब्लू का जो गैप है, मैं इसके ऊपर मूव कर रहा हूं, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड दिस गैप इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो दिस टाइप ऑफ सिलेंडर इट इज जस्ट लाइक दिस, यू सी। This is the base. Base is perpendicular to this line. So this is known as right circular cylinder, and this is the radius. Here it is. Okay, so it is just like this one. You can see.
So what is the definition? A surface generated by a line parallel to the given line and at a constant distance from this is known as right circular cylinder. Now we find the equation. इसको याद करो. Fixed line is given, means axis is given. Suppose I write x upon 1, y upon 2, z upon minus 3. Axis is given. This guiding curve is given. I write x square plus 2y square equals to 5, z equals to 3. This guiding curve is given. This is the generator. So we consider any point on this. Then we can write the equation of this. How to write the equation of the generator? That means this point I write alpha beta gamma, suppose I say. So x minus alpha, y minus beta, z minus gamma. This line and this line both are parallel, so these two parts will be identical. So it is 1, 2, minus 3. याद करो. Then we consider any point on this. The point will be satisfied by this. Then we try to eliminate k. हम k को हटाते हैं. रिलेशन आएगा अल्फा बीटा गामा के अंदर. अल्फा बीटा गामा को हम x y z से रिप्लेस कर देते हैं. That is the equation of the cylinder. But here it is right circular cylinder. So what is given? Radius is given. त्रिज्या दे रखी है. Axis is given. Only two things given. Axis is given. Radius is given. Here also you people are given two things. Axis is given and guiding curve is given. And guiding curve is given. Here guiding curve is always a circle. So guiding curve is not given. What is given? Axis is given and this radius is given. Then how to find the equation of the cylinder? Okay, so we just calculate it. इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको पहले देखते हैं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी इसमें. Projection of a line segment. Line segment का मतलब होता है रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा. Projection of a line segment on another line. Projection means concept. Suppose this is the line segment. Coordinates are given x1, y1, z1, x2, y2, z2, and this is the line. What is a projection? Projection means you just drop the perpendicular लंब डाल लेने से इस लाइन के ऊपर. Suppose this is A dash, this is B dash. परछाई foot A dash, B dash. So what is A dash, B dash? क्या है? प्रोजेक्शन. ये प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन? ए बी का प्रोजेक्शन ऑफ ए बी. किसके ऊपर? इस लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन. सपोज दिस इज एन, हियर इट इज एन, एन. How to find this? The direction cosines of this line must be given.
ये ध्यान रखना है. So projection of a line segment on another line whose direction cosine, ध्यान रखना मैं दिक् कोज्या बोल रहा हूँ, दिक् अनुपात नहीं. So direction cosine of this line must be given, means L, M, and BD. Then A dash B dash equals to x2 minus x1. फॉर्मूला याद रखना, 12th में पढ़ रखा है आपने, मैं केवल इसको रिवाइज करा रहा हूँ. x2 minus x1 times L plus y2 minus y1 times n plus z2 minus z1 times n. इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी, हम इसको काम में लेंगे. ओके, सो x2 minus x1 into L, y2 minus y1 into n plus z2 minus z1 into n. This is the way to find the projection. कई बार ये पॉइंट जो है उस लाइन के ऊपर ही हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको ये देखना कि प्रोजेक्शन कहां पर है. जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मालूम होने चाहिए. Let us consider one example to find the projection. Okay, so see. This line is given and direction cosines are right 1 by root 3 minus 1 by root 3 1 by root 3. These are the direction cosines. So L square plus M square plus N square 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. So 3 by 3 is 1. So these are the direction cosines. दिक् कोज्या. Suppose one point is here. This point is A. This point is B. Coordinates are right 1, 1, 2. And here are right -1, 0, 3, for example. इस पॉइंट को मैंने इस लाइन के ऊपर ही लिया है, तो A और A डैश जो है वो दोनों कौन साइड हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्रोजेक्शन जब भी कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. यू जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन. ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होगा, इसका परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉप होगा हियर. एंड सपोज दिस पॉइंट इज B dash. So what is the projection? ध्यान रखना ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं. x2 minus x1 means 1 minus this, so it is 1 minus of -1 into L means 1 by root plus y2 minus y1 1 minus 0 into -1 by root 3 plus z2 2 minus 3 into 1 by root 3. So this is the way to find the projection. Okay, x2 minus x1 into L, y2 minus y1 into n, z2 minus z1 into n. Now we solve one question on right circular cylinder. So we just see. Find the equation of right circular cylinder whose radius is 4 and axis is x equals 2y equals -z. Find the equation of right circular cylinder
whose radius is 4 and axis is x equals 2y equals minus z. Means this is the right circular cylinder. Here it is the axis and radius is given. This is 4. I consider any point on this P. This is the generator. If I write alpha, beta, gamma, then I have to develop the relationship in alpha, beta, gamma और उसको हम x, y, z से रिप्लेस करेंगे, लेकिन मैं ये सीधा लिख देता हूँ. Remember the equation of axis is given. Axis x equals 2y equals minus z. Divide the whole equation by 2. By 2. This is ध्यान रखना है एक्सिस गिवन है मींस लाइन गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और एक पॉइंट उस लाइन पे होगा. Here this point is 0 0 0. इस लाइन के ऊपर पेन मेन पॉइंट है. Now how to solve this question? I will draw the cylinder horizontal so this is the axis. This is any point P. Points on the line, that means on x-axis, that is A, I write 0, 0 is 0. Then I just join this. क्या ये डायग्राम आपको बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है? जो मैंने यहाँ -103 लिखा है वो यहाँ पर 0 0 0. If I draw the perpendicular here, suppose this point is Q. What are the direction cosines? ध्यान रखना ये डायरेक्शन रेशियोज है. डायरेक्शन कोसाइंस a upon under root a square plus b square plus c square. A means 2 upon under root a square means 4 plus 1 plus 4, so it is 2 by 3. 1 by 3 and minus 2 by 3. 4 by 9 plus 1 by 9 plus 4 by 9, 8 plus 8 plus 1, 9 upon 9, 1. So L square plus M square plus N square is 1. So these are the डायरेक्शन रेशियो. जो दिक्नुपात है मैंने देख को चेक कैलकुलेट कर लिए. जैसे यहाँ पर 1 by root 3 minus 1 by root 3 minus 1 upon root 3 था. So what is AQ? Now you can find AQ easily. That is the projection by using this formula. So it is x minus 0 multiplied by this plus y minus 0 multiplied by 1 by 3 plus z minus 0 multiplied by minus 2 by 3. So this is 2x by 3 plus y by 3 minus 2z by 3. This is AQ.
But what is PQ? PQ is 4. This is the radius. You can see this. Now the purpose is solved. You can use Pythagoras theorem to find the equation of cylinder. So see how to use the concept of projection that was learnt in previous class. मैथमेटिक्स में कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज होता है किसी को नहीं मालूम, इसलिए बेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. Now according to figure, AQ square, AP square, AP square equals AQ square plus PQ square. AP square, distance between these two points, it is x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square equals AQ square, means this 2 by 3x plus 1 by 3y 2 by 3z whole square, projection here, plus PQ square, that is the radius. This is x square plus y square plus z square equals, this is 1 by 9, 2x plus y minus 2z whole square plus 16. This is 9 times equals 144. This is the equation of cylinder. Understood? So this is the way to find the equation of cylinder. I repeat, find the equation of the cylinder whose radius is given and axis is given. Radius is 4 and axis is x equals 2y equals minus z. Consider any point on the generator and develop the concept. How to find its equation? Axis, write the axis in standard format. X minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. Here it is. These numbers are दिक् direction ratios. ध्यान रखना है. If we draw the diagram like this, just I have drawn the cylinder horizontal, so you can understand in better form. The point on axis always given because it is given. So here it is 0, 0, 0, anywhere. P be any point on the generator of the cylinder. So you write P, that is x, y, z. Now we want to calculate AQ. AQ is nothing, it is projection. So how to find AQ? It is this minus this into L, direction cosines of this. दिक् अनुपात दे रखे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए. ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा. पहले इसको कैलकुलेट कर लो, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम वेरिफिकेशन के लिए. ये भूल के भी कोशिश मत करना कि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि उससे नहीं होगा. ये कॉन्सेप्ट को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. हमने इसको कैलकुलेट किया, ये गिवन है, ये डिस्टेंस फॉर्म में से होगा, तो हम केवल थ्योरम जो है पाइथागोरस को उसको वेरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ यूज किया. हमारे पास में तीनों डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तभी हम रिलेशन को डेवलप करेंगे. ओके, सो फर्स्ट यू फाइंड AQ, दैट इज द प्रोजेक्शन. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन. इट इज then use
then simplify, you can solve this equation. So this is the way to find the equation of right circular cylinder. So see the difference between the cylinder and the right circular cylinder. Try the questions on this particular article, means find the equation of right circular cylinder when radius is given and axis is given. We will consider some more examples on right circular cylinder because this is very important and generally the question is asked in the examination. How to find the equation of right circular cylinder when axis is given but the radius is not given. Instead of radius, the point on the cylinder is given. Next question. Find the equation of right circular cylinder whose guiding means the circle is given. Means equation of this circle is given. This circle is given. So there are three types of questions. First is this. Second, axis is given and the point is given. And third, the circle is given, means the base of the cylinder, that is always a circle, is given to you. So we will consider tomorrow, that means in the next video. Thank you. Practice and practice and practice. So you will enjoy mathematics. Thank you very much.